Hello students, good morning. Today we are going to learn surface area of a right circular cone. So first of all, what do you understand by a right circular cone? Have you seen ice cream cone or have you seen birthday cake? So basically the ice cream cone and the birthday cake are the best example of right circular cone. So let us see, this is the ice cream cone shape any geometry. This is the, let us suppose, ice cream cone, okay, which having top is circular and these are the known as its slant height. So if top is circular having radius r and if the slant height of this cone is L, then first of all the lateral surface area of cone is given by pi r L unit square. Okay, lateral surface area, or this is also known as the curved surface, or so curved surface area of a cone is equals to pi r L unit square, where radii of base is base barabar r and slant height is given by L. So radius is r and if the slant height is L, then the lateral surface area or the curved surface area of a right circular cone is given by pi rl. Second, if we have to find the area of its base, that is the base is circular, so area of the base of a cone is equals to, because this is circular, so area of circle is given by pi r square. So this figure is also can be generated in this way. Let us suppose base is circular and top is conical, then this can be also considered as the shape of cone. Now this is, let us suppose this is any point A which is known as the vertex. This is the center of its base and let us suppose this is the radius and this be the slant height and this is the vertical height h. Then what is the intra-relation between height, radius and L? So because this is a right angle triangle, so the intra-relation between R, L and H is given by R square plus H square is equals to L square. So whenever if we have to find the height of a cone, then h square will be L square minus R square. So h will be given the positive square root of L square minus R square. So this is the value of L. Now we have to find what is the total surface area of cone. So here we calculated that the lateral surface area is pi rl and the area of base is pi r square. So lateral surface means, let us suppose if we have cone, then the area of only conical part is known as lateral surface or curved surface, and area of the base, that is a cone is in vertical form, then this will be the area of base, and if the cone is in reverse form, then this will be the area of base. So area of base is always pi r square. So total surface area, in short form we write always TSA. Total surface area of cone is equals to
curved surface area plus circular area. So curved surface area is your pi RL and circular area is pi r square. So this is pi r. If we take as common, then L plus R, pi r into L plus R unit square is the total surface area of a cone. So this is about the surface area of a right circular cone. So please pause the video and note down. Now we will do exercise 13.3 based on the lateral surface area, circular area and total surface area of a right circular cone. So let us see question number first. Read the question carefully and then we will solve. So question first is determine the base of cone. Determine the following. Make first question there का the diameter of base of cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. One cone is given. Let us suppose this one is the given cone. I am making this is vertical. So this is, let us suppose, cone. Base is circular and top is conical in the shape of ice cream cone. So what is given? Diameter of base. Diameter of base means, let us suppose this is the center, then the distance between these two parts is 10.5 centimeter. This is the diameter. So diameter the diameter given में क्या है? Question number first, the diameter of cone, that is D बराबर कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर. सो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस R will be equals to D by 2, that is 10.5 upon 2 centimeter. This is the radius of its base. And the second, its slant height. Slant height means this one is given 10 centimeter. This is the slant height L. So here the slant height is written by small l. So L is equals to 10 centimeter. Now what we have to find? Find the curved surface area. So the curved surface area of cone is equals to pi r l unit square. So imply that pi is 22 by 7, r is your 10.5 upon 2 into l is your 10 centimeter square, because area so unit अपन 10 centimeter square लिखेंगे. यहाँ जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे ये 0 आ जाएगा एंड 7 से 105 जो है 15 बार कैंसिल हो जाएगा. 15 7 जा 105. नाउ 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. दिस अगेन 4 को 2 से काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा और इस 2 से ये 10 5 टाइम कट जाएगा. सो फाइनली 11 into 3 into 15. So it will be 11 into 3 into 5 centimeter square. So 11 3 जा, आप छोटा कैलकुलेशन इजीली करें. 3 11 जा 33 into 5. So 5 3 जा 15, 15 and 1 16. 165 centimeter square is the curved surface area of given cone. So please pause the video, note down. Now question number second. Again read the question carefully first. Question second is find the total surface area of a cone
if its slant height is 21 meter and the diameter of its base is 24 meter. So first make the right circular cone. Let us suppose this is the any right circular cone having base as the circular, slant height. Let us suppose this is the vertex A, B and C. This is the center is O. Then OB will be radius. So first AB given, AB is given, AB that's the diameter of base is 24 centimeter. This is the diameter. So radius कितना हो जाएगा, diameter by 2 that is 24 by 2, तो 12 centimeter आपका क्या हो गया, radius of its base. And slant height is directly given, that is 24 meter. That is AB is 24 meter and 21 meter. Base was 24, so 21 meter is the slant height. This is your L and this is your 12 meter is its base. Now what you have to find? So सबसे पहले अपन क्या करेंगे, given में देखो the diameter of base that is capital D बराबर 24 मीटर. सो रेडियई कितना हो जाएगा, रेडियई R is equals to 24 by 2 that is 12 meter. And second the slant height that is L is equals to 21 meter. Now what we have to find? We have to find total surface area. So directly we will use the formula. So total surface area of a right circular cone is given by pi RL plus pi R square. मैं बार बार ये सेपरेट लिख रहा हूँ. Pi RL is your curved surface and pi R square is area of its base. Now you can take pi R as common. तो यहाँ क्या बचेगा, L और यहाँ बचेगा R यूनिट स्क्वायर. ना वैल्यू पुटअप करिए, 22 by 7. रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस आपका 12 है, सो इंटू 12. L आपका 21 है प्लस R इज योर 12, सो दिस इज मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 22 by 7 इंटू 12 इंटू 21 plus 12 that is 33 upon 1 meter square. So 22 into 12 into 33 upon 7. So how we will solve it? Multiply 12 into 22. So देखिए 12 into 2 कितना होगा, 24 carry 2 और 12 2 जा 24 and 2 26, 264 into 33 upon 7 meter square. On solving we will get this value is equals to 1244.57 meter square. Now you can calculate, multiply 264 by 33 and divide by 7. That will be the total surface area of a cone. So pause the video, note down. Next question number 3. The curved surface area of a cone is given 308 centimeter square. So question number 3. The curved surface area of a cone is equals to given 308 centimeter square. 308 centimeter square and the slant height that is slant height is represented by L. L is slant height, L equals to 14 centimeters. Okay, find radius of its base. So what we know, the CSA means curved surface area. See on the blackboard,
the CSA means cut surface area. So CSA is given by pi r l. CSA कितना दे रखा आपको? CSA is 308. So 308 is equals to 22/7 into r is r and l is 14. So here आपने को क्या निकालना है? यहां पर देखिए ये आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इधर ये रेडियस सेंटीमीटर क्योंकि इसका अपन वैल्यू पुट अप कर चुके हैं, तो 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 308 इंटू 7। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये दोनों न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर में, तो 22 इंटू 14। अब देखो ये 7 से 14 कितने बार कट जाएगा? 2 बार, और ये 2 से 308 कितना कट जाएगा आपका? 150 एंड 4 154, और 22 से भी ये जो है आपका 7 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आई? रेडियस इज r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि यूजिंग कट सरफेस एरिया से आपको क्या करना? कट सरफेस एरिया दे रखा था, स्लांट हाइट दे रखी थी, रेडियस निकालनी, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड फाइंड आउट करना आपको TSA, टोटल सरफेस एरिया। नाउ द TSA इज इक्वल्स टू पाई r इंटू r प्लस l यूनिट स्क्वायर। सो पाई मीन्स 22/7, r इज योर 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस l इज योर 14 सेंटीमीटर। So this is centimeter square. Now TSA is 22/7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 एंड 14 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 2 जा 42 का 2 कैरी 4, 42 और 4 46, so 462 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the total surface area of such a cone whose curved surface was given 308 centimeter square. So pause the video and note down. Next question number 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. A conical tent is given. Let us suppose this be the any conical tent having base as a circular, and this tent is of height. Let us suppose this is the center, then h is your 10 meter, and the radius of its base means this is the radius. So radius r is given 24 meter. तो क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ टेंट? स्लांट हाइट ऑफ टेंट, तो स्लांट हाइट ऑफ टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है? द हाइट ऑफ a right circular cone that is h बराबर गिवन है 10 मीटर, radii that is r is given 24 meter, and what we have to find? So h और r से सबसे पहले हमने को slant height find out करना. What will be the slant height? So we know that r square plus h square is equals to l square. ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी राइट सर्कुलर कॉन में लेट अस सपोज ये आपका रेडियस है, दिस इज हाइट है, तो दिस इज राइट सर्कुलर, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस l के बराबर होगा, सो l स्क्वायर विल बी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. नाउ r is 24, so 24 square plus 10 square will be l square. 24 square will be
So it will be 576 plus 100 is equals to L square. So 676 is equals to L square, implies that L will be positive square root of 676, that is equals to 26 मीटर. So slant height आपका कितना आ गया? Slant height is your 26 meter. Now what we have to find? फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्लांट हाइट यहां से निकाल लेंगे. यहां लिख लीजिए वी नो दैट. क्या जानते हैं आप? दिस इज द फॉर्मूला which we can say the what is the intra relation between the radius, height and slant height of a cone. और इसका रीजन भी मैंने बताया कि ये अगर हाइट है और ये रेडियस है तो ये स्लांट हाइट है. इन दिस केस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस. यही रिलेशन अपन ने यहाँ यूज किया. सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपी. ये जो आपके सामने एक कॉनिकल टेंट लगा रखा है, टेंट जिसमें कपड़ा कहाँ यूज हो रहा है? ओनली लेटरल सरफेस में. तो इस कपड़े की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर की अगर 70 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो सबसे पहले कि टेंट में हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड. सो सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्लॉथ required to make a tent. एक टेंट को बनाने में कितना का कपड़ा यूज होगा? दैट इज पाई आर एल. क्योंकि टेंट कहाँ है? जमीन पे कोई कपड़ा नहीं बिछा रखा, केवल कॉनिकल फॉर्म में इधर कपड़ा लगा हुआ और इधर कपड़ा लगा हुआ. तो द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट विल बी इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस. दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है. लेटरल सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर कॉन बोलो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया और कॉन बोलो, दोनों पाई आर एल यूनिट स्क्वायर ही होगा. ओके. नाउ देखो पाई कितना होता है? 22/7. आर कितना है? रेडियस आपको दे रखा था 24 और स्लांट हाइट आपने कितना निकाला? 26. तो 22 इंटू 24 इंटू 26. देखो 22, 24, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 13728 डिवाइडेड बाय 7 meter square. Okay, this is the total cloth will be used to make the tent. अब हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट अगर 70 रुपीज है तो टोटल कितना होगा? सो थर्ड क्वेश्चन इज सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास किसके बराबर है? ₹70. implies that cost of 13726 by 7 meter square canvas will be equals to 13726 upon 7 into 70 rupees. So इस 7 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा. So total cost will be 137,260 rupees. So this is your answer. Please pause the video, note down.